So yeah, so maybe I can start by telling a bit about how I got into architecture. मैंने कब decide किया, and when did I realize that it's a good career option. So basically, I was very interested in design since starting. मुझे design करना बहुत अच्छा लगता था. I was very interested in imagining things, as in designing spaces and all. So I was very interested in that. But obviously हमारे education system इतना clear नहीं था उस time तक, architecture वगैरह. It was more like engineering. So my parents had told me to do engineering, but then मैंने कुछ options और सोचे कि engineering से थोड़ा related हो, but थोड़ा different हो, थोड़ा सा उसमें design और creativity ज़्यादा हो. That's how I got to know about architecture. Where in my 11th and 12th, I took some counseling and some tuition for architecture entrance exams. Because आपके normal exams से थोड़ा different होता है. जैसे आपको normal exams में questions पढ़ने होते हैं, maths पढ़नी होती है, equations पढ़ने होते हैं, तो आपको architecture के entrance exams के लिए थोड़ा design पढ़ना होता है. जैसे they will tell you कि आप यहाँ पे खड़े हो, रूम के कॉर्नर में खड़े हो, रूम के उस साइड पे कुछ रखा हुआ, लैंप रखा हुआ, आपको कैसा दिखाई देगा. तो आपको ये सारी चीजें इमेजिन करनी होती हैं. तो आपकी इमेजिनेशन पावर अगर अच्छी होती है तो ये सारी चीजें बड़ी सिंपली और क्रिएटिवली आप कर सकते हो. तो ड्राइंग is important in the entrance exam, imagination is important in the entrance exam. तो अगर आपने जैसे I know 10th 11th 9th इस टाइप तक तो हमारे पास में ड्राइंग के कुछ we don't have any subjects as such, but then if your personal interest is there, then you find it very easy to give architecture entrance exams. बाकी फिर there are multiple types of exams right now in India that you can give for architecture. So there are two things. Earlier जब मैंने करा था, so science was compulsory in schools. So you had to have science. Now maths is compulsory. Maths and English are compulsory. So you can do it in commerce also. But you should have maths and English in your subjects. And एक और होता है इसका ऑप्शन. कुछ लोग मेरे कॉलेज में थे, उन्होंने भी अडॉप्ट किया था ये ऑप्शन. ये होता है कि आप 10th तक आप स्कूलिंग करो, फिर उसके बाद में 10th के बाद आप 3 years का डिप्लोमा करके फिर उसके बाद में भी आप आर्किटेक्चर कर सकते हो. डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर करके 3 साल, फिर उसके बाद में आप आर्किटेक्चर कर सकते हो. ओके, सो ऐसे तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे स्कूल में 12th के बाद में आर्किटेक्चर करना है, तो फिर ऐसे देन आई डिड आर्किटेक्चर. देन बाकी आर्किटेक्चर कोर्सेज आर वेरी लॉन्ग. So the course is for 5 years, but I think it's needed because वो 5 years में आपका डेवलपमेंट होता है, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप इमेजिनेशन करते हो, कैसे आप डिफाइन करते हो. So it's very important. And I think मेरे लिए the favorite part in architecture was that it's not about books. We are not taught any books. We are taught how to imagine. We used to travel a lot. हमें बहुत सारे ट्रिप्स पे ले जाते थे, घुमाते थे, बिल्डिंग्स दिखाते थे, फिर बिल्डिंग्स की स्केचिंग कराते थे. फिर उससे रिलेटेड हमारा कोर्स का सबमिशन असाइनमेंट होता था कि इस बिल्डिंग का कुछ रीडिजाइनिंग करना है, उसके प्लान्स सबमिट करने हैं, सेक्शंस बनाने हैं, ड्राइंग्स बनानी है. तो उस तरीके से आर्किटेक्चर में बेसिकली कॉलेज में पढ़ाई होती थी. एंड नॉट बुक्स बेस्ड. बुक्स वाले भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो, जैसे स्ट्रक्चर्स हो गया आपका, थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व होती है इसमें कि लोड कितना आता है, कितना डिस्टेंस देना चाहिए बिल्डिंग्स में एंड ऑल दिस, जो कि बाद में जाके काफी काम आता है. सो यस, कॉलेज में तो ये सारी चीजें ऐसे पढ़ाई जाती हैं. काफी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है आर्किटेक्चर स्टूडेंट की कॉलेज में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर टॉट, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कोर्स. इन अदर कोर्सेज यू हैव टू study a lot and spend your entire life in books. In architecture it's more like you do a practical, you go on the location, you understand the site, and then you have to apply that. Hey Aditi, thank you so much, Kar, for this. Can I ask you just what exactly does an architect do? Some of the students may not even know what if they want to imagine an architect, so what do they do? Like, what is a day? What would be a day in their life like? Okay, so architect, what basically an architect does is they design buildings. Okay,
सो जैसे आप लोगों के घर हो गए, बाकी आप लोग देखते हो दिल्ली में बिल्डिंग्स है, राष्ट्रपति भवन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हाई राइजेस हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। आजकल बहुत सारे नोएडा गुड़गांव में सारे हाई राइजेस बन रही है। उन सब की जो डिजाइनिंग होती है, पहले क्या होता था कि सिर्फ सिविल इंजीनियरों से बना देता था कि हाँ ये कॉल, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ पिलर, जस्ट मेक इट। नाउ architects decide how should it look. Okay, how should it look aesthetically, how should it have this room and that room, and kitne different uses nikal sakte hain space mein, like there can be a public or a common use area, there can be a private area. So architects design these things. They have the power to decide that what will the civil engineer work on. सो मैंने फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग बना दी, जैसे मैंने इंडिया गेट भी आर्किटेक्ट्स बना सकते हैं। तो दिल्ली में जब आप जाते हो सेंट्रल दिल्ली में, तो आप जितना देखते हो राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, और जितनी सारी बिल्डिंग्स है, तो ये सब आर्किटेक्ट एंड प्लानर ने मिलके डिजाइन करी है। तो उनका ये काम होता है कि वो डिजाइन ड्राफ्ट करके देखते हैं कि सामने से बिल्डिंग ऐसी लगनी चाहिए, साइड से ऐसी लगनी चाहिए, अंदर इसमें ये रूम्स होने चाहिए। तो ये सब आर्किटेक्ट करता है। इनफैक्ट जो आपका स्कूल भी होगा, वो भी एक आर्किटेक्ट बेसिक लेआउट देगा कि यहाँ पे क्लासरूम्स होने चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, ये लोकेशन बेटर है वॉशरूम के लिए, यहाँ पे एंट्रेंस इतनी बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे बस आनी चाहिए तो इतनी, कम से कम मिनिमम इतनी स्पेस छोड़नी चाहिए। तो बेसिकली कितनी स्पेस कितने लोगों के लिए रिक्वायर्ड है एक बिल्डिंग में, ये सब भी आर्किटेक्ट ही डिसाइड। सो यस, एंड हाँ, तो इन माय करियर ऑल्सो, तो जब मैंने काम किया आर्किटेक्ट की तरह, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी इंडिया में इंडस्ट्री में करने के लिए। तो पहले तो होता है कि आप अपना काम स्टार्ट कर लो, बट उससे उससे बेटर है आप किसी आर्किटेक्ट के साथ में थोड़े टाइम काम करो, कुछ बिल्डिंग्स डिजाइन करो उनके साथ में बैठ के, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं। बिकॉज बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाने पड़ते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले, बिकॉज वन हैज टू बी श्योर दैट इट्स अ सेफ बिल्डिंग। अदरवाइज जो लोग उसमें रह रहे हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्डिंग बहुत भारी चीज होती है, राइट? एवरीथिंग इज वेरी हैवी, it can fall down, it can break. So it's very important that the architecture understands that it's a very strong structure. तो इसलिए आप काम करो अंडर एन आर्किटेक्ट, ही विल टेल यू दैट व्हाट कैन गो रॉन्ग, यू लर्न फ्रॉम हिम, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट दैट यस यू नो दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स आई हैव टू अवॉइड, तो उसके बाद में आप खुद से काम कर सकते हो। बाकी कंपनीज भी बहुत सारी हैं, जैसे इंडिया में बॉम्बे में बहुत सारी हाई राइजेस बन रही हैं, फिर नॉट जस्ट बॉम्बे, इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज आउटसाइड जहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची ऊंची, उन सब की कंपनीज भी हैं इंडिया में। एमएनसीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर आपको सिखा देती हैं कि आप ऐसे कंप्यूटर पे बना दो, तो आप वो वाले जॉब्स कर सकते हो। एंड बाकी बहुत से लोग टीचिंग में भी जाते हैं आर्किटेक्चर में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होती है आर्किटेक्चर कॉलेज लाइफ। So they do another masters and then they do PhD and then they teach. तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं एज एन आर्किटेक्ट जो आप कर सकते हो। बाकी आर्किटेक्ट्स ये भी करते हैं, जैसे होटल्स होते हैं, तो होटल्स में आर्किटेक्ट्स का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है होटल्स, कि आप उसके इंटीरियर्स भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारी डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत सुंदर बना सकते हो बिल्डिंग को बेसिकली। So yeah, these are all the things an architect can do, and this is how you can reach to do a course, and course के बाद में फिर आप कुछ कुछ options जो मैंने बताए वो आप देख सकते हो। So some of the students are curious to know how did you get to know that you wanted to be an architect? Because now I think some of the students have got an idea of what an architect does, right? अब आप लोगों को समझ आने लगा है कि buildings के around design, but how would they know if this is they have the aptitude for it, if this is something that they can do? Like I, for instance, don't have any sense of aesthetics or like building. My spatial sense is not that good. So how did you know? When was the first time that you actually knew that you wanted to be an architect? Did you have someone that you spoke to? And just talk us through your experiences.
सो लाइक आई बी ऑनेस्ट, हमारे मतलब स्कूल्स में इतना कुछ हमें जैसे तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अबाउट नोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, मे बी 10 साल पहले 15 साल पहले इतना नहीं था. सो वी हैड टू डू आवर ओन रिसर्च. हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ही उस टाइम पे काम आती थी. सो अपेरेंटली मेरे एक अंकल थे, ही वाज एन आर्किटेक्ट. सो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू आर्किटेक्चर बिकॉज ऑफ हिम. तो जैसे ये वाली बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बातें उन्होंने मुझे बताई बाय चांस. तो उस टाइम पे मुझे ये थोड़ा सा सोचना था कि जैसे मेरी ड्राइंग कैसी है, ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन आराम से खींच पाती हूँ या नहीं खींच पाती हूँ. हमारा बेसिक एक ड्राइंग में टेस्ट होता है, स्ट्रेट लाइन कितनी अच्छी खींचते हो आप. क्या मैं खींचती हूँ या नहीं खींचती हूँ स्ट्रेट लाइन अच्छी. क्या मुझे नेचर पसंद है, मतलब मैं कहीं पे जा रही हूँ, मुझे नेचर देख के, मुझे स्केचिंग करने का मन करता है उसे देख के. क्या मुझे मतलब पेंटिंग करने का मन करता है या नहीं करता है. तो जो ये वाली जो हमारी क्रिएटिव साइड होती है दिमाग की, अगर वो ज्यादा एक्टिवेटेड होती है तो आप ऐसे कोर्सेज बहुत इजीली अडाप्ट कर सकते हो. मेरे केस में ऐसा था कि मेरा क्रिएटिव साइड था थोड़ा सा बेटर, कि मुझे कलर्स कॉम्बिनेशंस करना बहुत अच्छा लगता था, कि कलर्स, ये कलर्स के साथ बेटर जाएगा, ये शेप ऐसे शेप के साथ में अच्छी लगती है, एंड थिंग्स लाइक दैट. बट ये था कि अब I had a little bit of art, but I did not want to be a painter or an artist because I was not very confident about it. But I was very confident that I am good at um, learning. Okay. So if there is any thing that I can, because architecture is also, it's not just drawing and painting, you have to learn a lot of things. You have to go on the site and understand that why is this door designed like this, what are the details of a door के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं. It's not just that I am an architect so I'll just make this thing a rectangle and that's it, door. No, I have to learn how is this door made from the scratch. तो मुझे पता था कि ठीक है, आई एम हैप्पी टू लर्न, और मेरी क्रिएटिविटी भी अच्छी है, एंड इसमें और मेरी मैथ्स भी अच्छी थी. सो आई वाज हैप्पी कि हाँ, आर्किटेक्चर में मैथ्स इन्वॉल्व होती है, बिकॉज आर्किटेक्चर में आने के लिए मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ड्राइंग्स बनाते हो तो आप फ्री हैंड नहीं बनाते हो. एवरी सिंगल एवरी छोटे छोटे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही आप बनाते हो. सो आपकी मैथ्स भी, बेसिक मैथ्स, नॉट वेरी हाई लेवल, बेसिक मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. मेरी बेसिक मैथ्स भी अच्छी थी. सो इसलिए आई थॉट कि हाँ, this is something I can do. But also one thing I realized after starting studying architecture, you have to be hardworking. थोड़ा सा इसमें काफी रात भर बैठ के काम करना पड़ता है, बट इट्स फन हार्ड वर्किंग. मतलब तुम्हारा खुद ही मन करेगा कि हाँ, मैं बैठ के काम करूँ, मैं बैठ के बनाऊँ ये चीज. जब आउटपुट आएगा इसका, जब मैं देखूंगा कि अरे मेरी बिल्डिंग कितनी सुंदर लग रही है, तो आई विल लाइक इट. बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करके. Yeah. So would any of the student want to, yeah, any of the student want to ask any question to ma'am? Good afternoon, ma'am. This is me, Mandalika Singh from class 8. And my question for you is that, what qualities develop in ourselves to achieve our goals? Can you suggest some qualities, please? Thank you. Yes, sure. So first of all, you identify your strengths. Okay. Identify what are you good at naturally. So be aware that, okay, I'm not good at this particular thing, but I'm better at this particular thing. Then think of yourself, put yourself in shoes that, okay, if I become an engineer tomorrow, if I become an architect tomorrow, imagine yourself being there and doing those things. Okay. Now, ये हो सकता है कि तुम्हें अभी you don't like a certain subject, like for instance, you don't like biology, but then तुम्हें पता है कि नहीं, I imagine myself as a doctor. So even if it is not your strength, then start working on it. So it's very important to know that what you like, what you don't like, and the things that you don't like but you want it, start working on those, start learning them, because learning can make everything possible. If you learn something, you will reach there. So आपको अगर अपने गोल्स को इजीली अप्रोच करना है, पहले तो आपको अपनी कैपेबिलिटी अवेयरनेस होनी चाहिए. उसके बाद में आपको उस
गोल को रीच करने के लिए अपने अंदर क्या इम्प्रूव होगा, उस पर आप काम करो, वर्क ऑन दैट. That will be good. That will make it easy. Okay, ma'am. Thank you. I will surely follow your tips. Okay, thank you. Okay, anybody else wants to ask something? कोई बिल्डिंग्स पसंद है किसी को? वैसे किसी की कोई फेवरेट बिल्डिंग है दिल्ली में, या कहीं भी कोई मॉन्यूमेंट हो? इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. I used to like a lot of monuments actually. That is also one thing. While I was young, I used to love looking at monuments and I used to think, wow, कैसे सोचा होगा, कितनी डिटेल है इसमें, कैसे बनाया होगा. So that's what made me very interested. Ma'am, I like Jantar Mantar. Oh, like It's not a building. It's not a building, but it was an observatory and it's a very interesting building. पता है? मतलब it's made on astronomy, so it's not a building, but it's a very nice. Ma'am, I like Burj Khalifa. Oh, you like Burj Khalifa? Okay, that's good. That is a very new building. Not a monument really, but it's a new building. But it's also, and in Burj Khalifa also, huge team of architects, huge team of engineers. They all collaborated together because not only architects can make such a building, right? So you need a lot of engineering also in that. So a lot of civil engineers and architects, they collaborated to make that building. And my World One in Noida. World One in Noida, okay, nice, good building. I think वो अभी develop हो रही है ना, बनी नहीं है. It's still getting developed. Yes, good. Yeah, children, do you want to ask more questions to ma'am? Any one of you? Good afternoon, ma'am. My name is Shamiksha Mishra and I'm from class 8. My question is that by choosing which stream we can be an architect? Okay, so Samiksha, earlier it was science stream which was necessary. Science was very important to do architecture, but now the regulations have changed. So check the updated regulations, I think, but you need minimum maths and English only. So if you do commerce, then you can just take maths and English, and बाकी तो different streams आपको देखने पड़ेंगे, शायद उनमें applicable नहीं, but at least maths and English होना चाहिए आपके पास. I think arts के through थोड़ा tough है because maths शायद नहीं होता, इसलिए maths is necessary. No problem, Samiksha. And also, excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, what challenges you faced at the initial stage of your profession and how you overcame them? Okay, so initially, I'll tell you, it's very tough to get. It was very tough to get jobs in India for architects. So it was because there are a lot of architects and few architecture companies. So there's a lot of competition. But if you get a job, then you have to work very closely with the architect. Be of a very good use. So I got an internship. I started with an internship. It was a low paid internship initially. Not a lot of money was there. But then if you work very closely with the architect, it becomes very easy for you to make your place. So that was a challenging time for me. But abhi jo hai wo thoda sa better ho gaya hai because a lot of international companies have opened their offices in India. So big architecture companies, जैसे अगर आप लोगों को नाम याद रहे तो जैसे एरूप है, ACOM and GWP. So ये सारी कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं. तो इन लोगों ने इंडिया में अपने ऑफिसेस खोले जिससे आर्किटेक्ट्स कैन नाउ इजीली फाइंड अ जॉब. But earlier, that was a big challenge for me. But now it's all better. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, what is the best part about your work? Best part about my work is seeing the outcome. So if I have an imagination that, you know, this room should look like this. So when that thing is done and when I reach the site, when I look at it and I'm like, wow, this is exactly how I imagined it. So my imagination became a reality.
So that satisfaction of seeing that whatever you think, whatever you imagine really comes in front of you, that is the best part of architecture. For any architect, every architect will say this, when they design a building and they see, yes, the building is there, that makes them like permanent in the world, that, you know, their imagination now exists for a very long time for people to see. And ma'am, another question is, what skill has served you best as an architect? Sorry? What skill has served you best as an architect? What skill has served me best? Okay, that's tricky because there's so many skills involved. But I think in my cases, hard work is very important in architecture, because it's not like you will get an idea anytime. You know, an idea comes at probably like 2 a.m. in the night. So I need to know that, okay, if I have an idea coming at 2 a.m. in the night, I will open up my sketchbook and I'll draw it. You know, so knowing that, you know, you can work anytime, that is very important. And that has worked the best for me, because if I'll forget that idea and then I'll be like, no, tomorrow morning 9 a.m. I'll open my computer, then only I'll do it. So I might forget it. So it's important to be very flexible when you have to work. Okay. Yes. Also, I can tell a bit about the colleges. Different types of colleges are there. Delhi में कुछ colleges हैं, जैसे SPA है, it's the best college for architecture. फिर गुजरात में बहुत अच्छे colleges हैं, सेप्ट है. फिर दिल्ली में जामिया भी है. तो और साउथ में भी कुछ कॉलेजेस हैं, तो काफी कॉलेजेस हैं अब तो. एंड इनफैक्ट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स भी देते हो, तो वो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. तो JEE हो गया आपका, फिर AIEEE हो गया. तो आप इनके थ्रू अगर आप इनमें अप्लाई करते हो, ये एग्जाम्स देते हो, तो आप इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर दोनों के कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. सिमिलर सॉर्ट ऑफ पढ़ाई करनी होगी आपको आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के लिए. बस आर्किटेक्चर में आपकी इमेजिनेशन थोड़ी अच्छी हो तो अच्छा रहता है आगे के लिए. Any other questions, students here? Sir, I'm from class 6. I want to ask a question that which profession also come to your mind? Which profession besides architecture? Other than architecture, yeah. Very good question. I think other than architecture, if I was not an architect. See, I love interior design, but an architect can also do interior designing. I think if not this, then I would love to be a teacher. I would love to teach. Maybe I teach something. I don't know what, but I would teach something. Can you differentiate between architecture and interior designer, the work of like both of them? Yeah. So what architect does is, architect focuses more on the outside of the building, more on the space, more on the permanent things, like where should be a wall, where should be the floor, where should be the kitchen, what should be the layout of the kitchen, and in what direction should be the entrance. So architecture looks at very permanent sort of things. He or she can also think about interior designing, but sometimes some companies, they tie up with just specific interior designers who can focus on designing the inside. More like how should you place your furniture, in what direction should you put your bed, and what should be the color aesthetic of your house, how should your wardrobes be, how can you utilize the maximum space in your house. So if you have limited space in your house, how can you utilize it to the best? You can have the maximum amount of storage, you can have the maximum amount of movement area, and still it looks very pleasing to your eyes. Because if your house, the place you live in for like 80% of the time, if you are able to see that it's looking very pleasing, it's giving my brain a lot of calmness, so it will improve your productivity. So interior designers think about that how different colors can affect your psychology, how different colors can make you feel. So they think about these things and design
the interior walls and floor finishes and locations of furniture and things like these. Ma'am, what are the, yeah. There's another stream also with architects. जैसे एक architect तो घर डिजाइन करता है, तो एक urbanism भी होता है जिसमें वो सारा city डिजाइन करता है, not just one house. So एक architect focus करेगा कि मैं इस building को कैसे best बनाऊं. आप आर्किटेक्चर करके ही अर्बनिस्ट भी बन सकते हो, जिसमें आप सिटी डिजाइन करना सीख सकते हो. जैसे यहाँ पे ये कॉलोनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये रोड होनी चाहिए, इस कॉलोनी में ये पार्क्स होने चाहिए, फिर इस पार्क्स के पास में ये शॉप्स होने चाहिए. तो ये सारी प्लानिंग भी एक आर्किटेक्ट कर सकता है. Okay, thank you, ma'am. Another question is like, what are the challenges and attractions of this field? So challenges would be you have to keep on upgrading yourself. That is one challenge, because nowadays all companies expect you to know a lot of softwares. Okay, so you have to learn softwares, which is fun for me, but maybe it's not fun for somebody. But जैसे पहले के older architects used to draw with hands. Okay, so now we don't draw with hands anymore. We draw with softwares. We draw on our computers. So for us in our age, it's still okay. But as we will keep on moving, we will have to keep on learning those softwares. We'll have to keep on learning and understanding how through computers we can make it easier. And sorry, ma'am, what was the second part of the question? Ma'am, it was attractions of this, of this profession. Attractions of profession are many. First, as a student, I would say student was doing architecture was very enjoyable, because we used to go around on trips and see different buildings and cities and understand their architecture styles. So even now we do a lot of case studies. So case studies are very interesting, because you understand how a different building is interacting with people. So that was a very attractive thing. Besides that, another thing I find very attractive in architecture is, I think, flexibility. So flexibility, that you can design this building and make it look like anything that you want to. That's just amazing. Like, you don't have to be stuck by a lot of things. You can, it's very flexible to be changed. I think that's very attractive. जैसे I think पेंटिंग में होता है. पेंटिंग में आप कुछ भी बना सकते हो, राइट? लाइक वट एवर यू इमेजिन. आप कुछ ड्राइंग बना रहे हो, फ्री हैंड ड्राइंग बना रहे हो, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो. तो वैसे सिमिलरली आर्किटेक्चर में भी आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी स्पेस होता है कि हाँ ठीक है, मैं इसमें कुछ भी बना सकता हूँ. आई एम नॉट बाउंड टू जस्ट मेक अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता हूँ. तो एक्सपेरिमेंटेशन इज अ वेरी interesting thing, and not a lot of professions will offer you experimentation, because in a lot of other professions you will have to go by what's written in the book. You'll have to follow that. So experimentation is limited. So like engineering में या medical में जो आपको exactly book में चीज बताई गई है, आपको वो ही apply करनी है. But architecture में आप अपने हिसाब से, अपनी understanding से change करके चीजों को apply कर सकते हो. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, do you have a signature style of your own? Signature style of my architecture? Oh, interesting. Yes. Abhi tak I haven't designed like buildings of my own, but yeah, I can say I have a signature style, but I'm not very rigid about it. I mean, I like a certain style of buildings. Like for instance, when I was in school, we had to design a lot of types of projects. So I used to experiment a lot that time with different kinds of architecture and design styles. But then by the time I reached the end of my college, I realized that I have a style. And in my style, whenever I design a house, I design curved spaces. So that is my style of designing. But जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाते हो, आपका स्टाइल डेवलप होता जाता है थोड़ा थोड़ा.
उसको वो ही डिजाइन का स्टाइल इवॉल्व होता जाता है, बट वो एक डायरेक्शन में एक तरीके का स्टाइल आपको अच्छा लगने लगता है. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. Any other question, children, or should we wrap up the meeting? Any other question from any one of you? Yes, ma'am. I become an army officer. You want to become an army officer? Okay. Okay. You know, architects also work with the army. जो आपके आर्मी के वो लगते हैं ना अलग अलग जगह पे, you have to establish camps and you have emergency camps establish करने होते हैं, तो architects layout देते हैं उसका कि कहाँ पे आप अपने washrooms लगा सकते हो, कहाँ offices. Architects are also important in that. Okay, thank you, ma'am, for sparing your precious time. This talk would definitely be beneficial for our students in building their future. Thanks a lot for being a part of our meet. Thank you so much, Nidhi ma'am. It was great doing this session. Thank you once again, ma'am. Thank you. Bye, Thank you. guys. Now the students can unmute themselves and thank Aditi ma'am. Just unmute yourself and. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, guys. ma'am. Thank you, And ma'am. best of luck. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. And best of luck Thank you to so your much, ma'am. school, and best of luck for achieving the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, guys. Bye, guys. Thank you, ma'am. Fine, students. Thanks a lot. Okay. Bye, bye. Bye, students. Bye, Kavya. Thanks a lot. Bye, guys. Good luck. Have a nice day. Thank you. Bye, ma'am. Bye.